data structure which is called linked list. So what is a linked list? Linked list comprises of at a time two parts. Okay. So what are those parts? Let me tell you. I'll just put one type of puzzle for you. 1, 5, 2, 3, and 3, 4, and 4, 2. Okay. This is an example of linked list. Now, how does it work? Let's understand first what all things are happening here. You have, so this is one element. Now every element comprises of two parts over here. Okay. First is the value and second is the link. Okay, value and link. There are two parts here. 4 elements, 2 parts. I'll explain, see how it works. This is element number 1. This is element number 2. Then element number 3 and element number 4. Every element comprises of what? Its value and its link. Two parts. Is it clear to you now by this sheet? See, I will explain. The linked list, now just listen to me carefully. This linked list comprises of total 4 elements. Okay. The first element value is 1 and link is number 5. That is, it is linking to the 5th element. Is there any 5th element? No. So I will put suppose 4 here. Okay. So from 1 it is jumping to 4. Which is 4th element? This one. Okay. Value of 4th element is 4. After that it will jump to 2. Which is 2? This one. Element number 2. From 2 you are jumping to, the value of 2 is 2, and after that you are jumping to element 3. Okay, element 3 is this. After element 3 nothing is left, so I will put null value. I hope all of you know what is meaning of null value, right? So guys, this is how a linked list works. Is this clear to everyone? I think by the idea of data which I have generated over here, all of you should get a clear picture how the linked list works. These are the two values. Is it clear to everyone? I'm saving this as linked list intro. Yes. So I'll repeat. What is a linked list? It is a list of many values, okay, multiple values which are present, and every element, this one is element, okay, this one is element, this is element. So every element contains two parts, that is its value and the pointer to the next element. આપણે pointers use કર્યા હતા, બરોબર? So this has very direct connection with use of pointers. So what is the first element? This one, 1. We always start with first element. Now again there are some assumptions. આમાં અમુક assumptions આપણે કરવા પડશે. Say for example, if you want to know how the linked list can be accessed, then it is accessed only by one element, that is first element, right? If you want to jump to particular element, what you have to do? Go to the first element, find out which is the next. So this is the next, so go here. Which is next? 2, so you go here. Which is next? 3, so you go here. Which is next? Null, means the list is over, capacity is full.
list is over. Okay, so this is how a linked list is being represented. We will see different examples. Now, what is the category of this linked list? We will call it as a simple linked list or singly linked list, because the link is to the next only. There is no link to the previous. Are you all getting my point? Please, I want some messages. Yes, yes. There is a big pause into this session. Why? Everyone, please be attentive. Yes. Okay. Good. 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 समझ में आ रहा है ना? सबको समझ में आ रहा है? थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. अब तक जो कर रहे थे आप एरे में सिंगल एलिमेंट था, अभी हर एक एलिमेंट का दो पार्ट्स है. ओके, सो देयर इज वैल्यू, देयर इज the value to next. Okay, so that is link. It is known as a link. So every node comprises of, अभी मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो. Linked list is the set of elements or set of nodes in which every element or a node, इसमें दो चीज, ये जो हर एक बॉक्स है उसको हम इधर एलिमेंट बोल सकते हैं या तो नोड बोल सकते हैं. ठीक है, देयर आर टू टर्म्स यूज. So it is a linked list is a list of multiple elements or nodes in which every element contains one part referring to its value. Okay, and the second part which refers to the link to the next. It is linked to next only. अभी मैं next इसलिए बोल रहा हूँ, previous अभी आप लोग को क्वेश्चन होना चाहिए कि प्रीवियस की लिंक नहीं बना सकते. सपोज ये 1 है तो इसमें प्रीवियस क्या आएगा? सपोज 2 है, नेक्स्ट इज 3. 2 के पहले क्या था? वेयर इज 2 रिफर्ड? इज रिफर्ड बाय 4. तो 4 में क्या आएगा? नेक्स्ट 2, लेकिन प्रीवियस क्या आएगा? ओके, यू कैन डू दैट और नॉट? यस और नो? So this is simple linked list, but if you apply, you can also add one more logic into it, that is known as a doubly linked list. Doubly means previous and next. Both the information are known to you. Is it clear? इतनी बात समझ में आ गई? I will just clarify one more thing so that it becomes little more easy for you. इसमें कैरेक्टर लिखता हूं ताकि आपको नंबर में कंफ्यूजन ना हो. First is A, then it goes to fourth. This is fourth element. Fourth element value is B. This is B, suppose. Then it goes to second element. Second element value is C. After that it goes to third element. Third element value is D. Okay, and after that there is null. तो ऐसी सीक्वेंस बनेगी. I am giving with reference to characters, because अगर मैं कैरेक्टर दूंगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा rather than same data types over here. Now is it clear? In a linked list, second fact about the linked list, only first value reference is available. हमारे पास डेटा कौन सा अवेलेबल है? ये 1 कहाँ पे स्टार्ट होता है? ये कॉलम नंबर, रो नंबर 5 से. ठीक है, दिस इज रो 5. तो 5th रो से स्टार्ट हो रहा है मेरा लिंक लिस्ट. Only one information I have, that is it starts with 5th row, 5B. Suppose this is column B, right? So from 5B my linked list starts. Only that information is available. Now if you want to count how many elements are there, go to 5B, then jump to next and keep on counting. Then you will get the idea how many elements are there. हमको सिर्फ क्या पता है? नलनी जगह ए आवे. No dear. See, this is first element. What it contains? Value A and link to next. What is next element? 4. So next element 4 here. 4 contains B. Link is 2. So it jumps to 2. 2 contains C. Next element 3. So it jumps to 3. 3 contains D. Next element. Is there any next element? No. I don't have any element. That's why I put null here. तो null, देव का null क्या दिखा रहा है? End of the list. You can say that this third element is the last element of my list. बीच में कितने एलिमेंट मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरा एलिमेंट है, वो लास्ट है, उतना मैं बता सकता हूँ. ठीक है? Now, why we are using this? You might be having a question कि सर इतना कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहे हैं आप? Because
जब मेमोरी होती है, you know what actually happens is in memory they are using linked list only. Right now, if you have got, see I am showing you here on right side, this is a memory map. ठीक है, अब मेमोरी मैप में ये होता है कि आपको जब आप नंबर स्टोर करते हैं, एंटर एनी वैल्यू, एंटर अनदर वैल्यू, whenever you are storing, right, it goes inside the memory. But sometimes what happens, the values are already stored inside the memory. Okay, सिचुएशन मेमोरी की ऐसी होती है, रेंडमली मैं बताता हूँ आपको. सपोज आई हैव ए बी सी हियर. ठीक है, अभी मेरा मेमोरी पॉइंटर यहाँ पे है. यू से दैट आई वांट टू एंटर सम वैल्यू, कोई नंबर एंटर कर रहा है, तो 12 एंटर हो गया. अभी नेक्स्ट में गया, प्लीज एंटर अनदर वैल्यू 16. चलो, फिर यहाँ पे आया, प्लीज एंटर अनदर वैल्यू. अब क्या होगा, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, यू नो, इफ यू एंटर द वैल्यू सम अदर प्रोग्राम इट इज यूजिंग दिस डेटा, तो उसका करप्ट हो जाएगा. ठीक है, क्लैश आएगा मेन मेमोरी के अंदर. दैट्स व्हाई व्हाट यू विल डू, यू हैव टू फाइंड आउट. अभी और स्पेस कहीं पे है, चलो ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस है, यू आर गिविंग द नेक्स्ट नंबर हियर. नाउ द प्रॉब्लम इज हाउ यू विल रिमेम्बर. ये सब हैफेजार्ड हो गया. ठीक है, इसमें पहला नंबर कौन सा डाला था, दूसरा कौन सा था, हाउ यू नो. ओके, सो द आंसर इज यू यूज द लिंक लिस्ट. ठीक है, तो लिंक लिस्ट करेंगे तो क्या होगा, 12 इज माय फर्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू इज एट K6. सी दिस सेल इज K6. ठीक है, तो नेक्स्ट वैल्यू K6 में. फिर यहाँ पे लिखा है मैंने, this is all happening inside, actually operating system is taking care of all these things. Okay, so K6 I have written here. Where is the next value, next value is at I7, तो I7 पे आएगा. ओके, यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू. फिर यहाँ पर लिखा होगा what, where is the next value, suppose it is K5, तो यहाँ आएगा K5 यहाँ पर है. ठीक है, so I am storing next value. So this is how the links are there. But if you see the data as a whole, you won't understand what is all this. This may seem to be garbage, but it is containing the links of each other. Okay, so which is the link, what is the next, that all details they can be provided if we use this type of linked list data structure. चलो अभी मैं स्लाइड पे जाता हूँ. Before that, I want clarification in terms of conclusion. Anyone can write down or you can unmute and say also कि अब समझ में आ गया लिंक लिस्ट किसको बोलते हैं. Yes or no? Brajesh is there today? Brajesh है कि नहीं इसमें? Jubin? Yes, Jubin. You can just unmute and explain what we have done today. Hello. Yes, Jubin. We are hearing. Yes, sir. The linked list mainly stores. Just a minute. My volume is mute. Yeah, sorry. Can you repeat, please? Okay. The linked list mainly gives the position of the next number or the next element which we want to fetch. So. Okay, it gives the next element. Actually, it doesn't give. See, it is list of multiple elements. हाँ, every element stores. हाँ, हर एक एलिमेंट में क्या स्टोर होता है? Position of the next element. Position of next element और सबसे important value of this element. वो तो जरूरी है ना, क्योंकि अगर डेटा, ये जो पहली चीज है वो डेटा है और सेकंड पार्ट है वो लिंक है. क्लियर? Okay. Okay, thank you. You can move to someone else. Oh, is it Nisarg? Okay, many happy returns of the day, Jubin, on everyone's behalf. Thank you, sir. Thank you. Have a great day and keep exploring the things. Be creative. It is going to help you out. Yes, sir. Now you are going great. Okay. Okay, I wished on everyone's behalf, please, guys. You can do it later through your WhatsApp group.
Okay. Yes. Who else can explain general thing about the concept? દેવકન દેવકન બોલો તો ગુજરાતીમાં બોલો ચાલશે. અનમ્યુટ કરો દેવકન. યસ સર. હા, મને સમજાવો લિંક લિસ્ટ શું છે, આ શેના માટે યુઝ થાય ને શું વસ્તુ છે? લિંક લિસ્ટ એટલે આપણે ડેટા સ્ટોર થયો હોય તો એનું પ્રીવિયસ ડેટા કઈ જગ્યાએ સ્ટોર થયો હોય અને નેક્સ્ટ ડેટા કઈ જગ્યાએ સ્ટોર થયો હોય લોકેશન જાણવા માટે લિંક લિસ્ટ નો યુઝ થાય છે. વેરી ગુડ, પરફેક્ટ. હવે અત્યારે તું જે બોલ્યો ને, યુ આર ઓલ્સો રાઈટ. પ્રીવિયસ અને નેક્સ્ટ છે ને, તો એને આપણે કહીએ ડબલી લિંક્ડ લિસ્ટ છે. અત્યારે હું તમને છે ને, આપણે પહેલા સ્ટેપ વાઇઝ જઈશું. ઓકે, so this is actually an example of, I will change the word here, this is singly linked list. એટલે એમાં શું હોય એ પણ સિંગલીમાં શું હોય? નેક્સ્ટ જે ઓલી ખાલી નેક્સ્ટ નું જ લિંક હોય, બરાબર? હવે જ્યારે સિંગલી લિંક, ઓકે, યુ કેન અનમ્યુટ નાઉ, મ્યુટ યોરસેલ્ફ પ્લીઝ. So in singly linked list only the next value is given. Okay, હવે સિંગલી કદાચ કોઈ એવો ક્વેશ્ચન કરે કે સિંગલી લિંક લિસ્ટ એવું હોય કે જે ખાલી પ્રીવિયસ જ હોય, is it possible? Do you think it is logical? You have your value and previous value, your value and previous value. આવું હોય છે કે કોઈ મતલબ નથી, બરાબર? કારણ કે આપણને ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ કેવી રીતે મળશે? લિંક લિસ્ટ સ્ટાર્ટ કરવા માટે પહેલો એલિમેન્ટ તો જોઈશે ને, રાઈટ? સો what you have to do is, the singly linked list, it is available only for data and link to the next node. Okay, and link to next and previous both, if it is available, that is known as doubly linked list. હવે આપણે એક સ્ટેપ આગળ જઈએ. હું વેરીફાઈ કરવા માંગુ છું કે all of you have understood it thoroughly or not. So how I can know? Only if I got, I am going to convert a singly linked list into, હવે હું આ સ્ટેક ને બધી ડિટેલ ડિલીટ કરી દઉં છું. હવે બહુ થયું સ્ટેક એન્ડ ક્યુ, સ્ટેક એન્ડ ક્યુ, ઘણી બધી પ્રેક્ટિસ થઈ ગઈ છે, રાઈટ? So now we are moving to, instead of singly, we will make doubly linked list. I am using the same list. Okay, now all of you should identify that if I use the same list and convert into doubly linked list, what is going to happen? Are you all with me what I am doing? Are you trying to get the idea? Yes, Keval is yes. બરાબર છે. ચલો, એને એકને જ ખબર પડી, કેવલને એકને જ પડી છે ખબર? What about other people? This is element number 3, and yes, Jubin also yes. Only this standard people saying yes. Okay, ચલો 4 એલિમેન્ટ છે, પણ આનું નામ હું ચેન્જ કરું છું. I am making it doubly linked list. Okay, what is doubly linked list now? Doubly linked list means every element comprises of previous, its own value, and next value, 3 parts. Okay, so હવે અહીંયા લિંક વર્ડ તો યુઝ નહીં થાય, બરાબર? કારણ કે લિંક ટુ નેક્સ્ટ અને લિંક ટુ પ્રીવિયસ છે, એટલે આપણે શું યુઝ કરીશું? પ્રીવિયસ, વેલ્યુ અને નેક્સ્ટ, 3 પાર્ટ હશે, બરાબર? બધા અહીંયા everyone concentrate here what I am doing. Now you will get a very good picture about what a doubly linked list is. आपको क्लियर हो जाएगा डबली लिंक किसको बोलते हैं वो, ठीक है? अभी देखो ये सिंगली लिंक लिस्ट ऑलरेडी था, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा हूं. नाउ आई एम कन्वर्टिंग दिस सिंगली इनटू डबली लिंक लिस्ट. ओके, फर्स्ट एलिमेंट છે a, એના પછીનો નેક્સ્ટ છે એ fourth element, એટલે fourth પર ગયા, fourth value is b, next value is 2, so go to jump to 2 into next value is 3, so I am jumping to 3, value is b, and next is null. Null means this is last one. चलो,
The same list I am using, but I am creating doubly. It means I have to fill up this area. If you are able to fill up this area by yourself, at least any one person from the class, I will be very happy. What will come over here? इतना अगर आप बता देंगे, लिंक लिस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर. हाँ बोलो. सर मैं यस 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 जुबिन बोलो. सर A4 means Okay, see the question here is सबसे पहला एलिमेंट 1 है. 1 के पहले कौन सा एलिमेंट है? कोई एलिमेंट है क्या 1 के पहले? हो सकता है null no element. नल. वेरी गुड, परफेक्ट. सो 1 के पहले कोई एलिमेंट नहीं है, सो इट इज नल. 2 के पहले कौन सा एलिमेंट है? बताओ. अच्छा, so this is like, don't get confused. Yeah, Silva got the answer. Mayank, please concentrate here. ये कुछ थोड़ा अलग है मयंक. कौन सा है? A 2 के पहले. See that अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इनडायरेक्ट आंसर. किसके बाद 2 आ रहा है? यहाँ पे देखो, किसके बाद 2 आ रहा है? 4 के बाद आ रहा है 2. See this element, 4 के बाद 2 आ रहा है. ओके हाँ राइट. 4 के बाद 2 मतलब 2 के पहले क्या आएगा? बोलो. B अरे B 4. You have to write the element value, not the value, please. Value तो 4 में 4 की पड़ी है, 2 में 2 की पड़ी है. Don't get confused. अब क्लियर है? Sir, can you explain once more? Once more. First element is 1. Okay. Value of 1 is A. Okay. After first element, we are jumping to fourth element. Where is fourth element? Fourth is here. Value of fourth is B. Okay. And after fourth element, which element I want to move? Second. Where is second? Here. Value of second is C. After second, अभी मैं आफ्टर का ही बता रहा हूँ सिर्फ लॉजिक. देयर इज थर्ड एलिमेंट, तो थर्ड पे जंप किया, उसकी वैल्यू डी है, उसके आफ्टर कुछ नहीं है, इसलिए नल डाला. तो दिस इज फॉरवर्ड लिंक. अब रिवर्स लिंक करते हैं हम. ठीक है. सबसे पहला एलिमेंट 1 है, उसके पहले क्या आएगा? कुछ नहीं. ओके ओके. उसके बाद क्या है? सी देयर इज अनदर मेथड, यू कैन गो लाइक दिस आल्सो. पहले के बाद क्या है? फोर्थ है, तो फोर्थ पे हम क्या लिखेंगे? फोर्थ का प्रीवियस क्या हुआ? 1. ओके. 4 के बाद क्या है? 2. तो 2 का प्रीवियस क्या हुआ? 4. ओके. 2 के बाद क्या है? 3. तो 3 का प्रीवियस क्या हुआ? 2 हुआ. समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आ गया आपको तो लिंक लिस्ट क्लियर. Guys, frankly tell me, I will repeat the whole process in some different style. Forget about all these things. I will repeat in some different style. No problem. But I just want to know before I move to another exercise, how many of you got clear idea of this? Just type yes, yes. इसको पता चल गया? Hardik is no. Jubin Akshay, only 2, 3, 4 people. People are confused, I think. चलो ठीक है. चलो ये भूल जाओ. Forget this. We'll move to another example. ठीक है. चलो नाम से करते हैं. जिसको नहीं समझ में आ रहा है प्लीज, I will assume that all other people have not understood. जिसको नहीं समझ में आ रहा है प्लीज नो 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 टाइप करो. तो उनके नाम ही लिखूंगा यहाँ पर, बिकॉज आई बिलीव कि उनको समझ में श्योर आ जाएगा. 100% गारंटी. ठीक है. जो नो लिख रहे हैं अभी 1 मिनट में समझ में आ जाएगा. ओके चलो. अब देखो यहाँ पे लिखा है. अब मैं अगर चैट बॉक्स देखूं तो सबसे पहला नो आया था प्रत्युष का. ठीक है. तो अब प्रत्युष का नंबर कौन सा है? 06. ठीक है. तो प्रत्युष का नंबर 6 है और उसके बाद
नेक्स्ट, मैं लिखता हूं यहाँ पे प्रीवियस और नेक्स्ट, ठीक है। प्रत्युष का नंबर 6 है, तो उससे पहले किसी ने नो किया था, किसी ने नहीं किया था, तो मैं यहाँ पे नल लिखूंगा। प्रत्युष आफ्टर हिम, ओके, आई विल जस्ट इंक्रीज द फॉन्ट सो दैट इट इज विजिबल टू एवरीवन। You all can see this. So I will delete this one. Yeah. Okay. So after him, okay, got it. There is just yeah. Next, after him there is Mohil. तो अब मोहिल, मुझे यहाँ मोहिल नहीं लिखना है, राइट? मुझे क्या लिखना है? 42. अब ये है मोहिल, ठीक है। अब उसके पहले कौन था? प्रत्युष। उसका नंबर क्या है? मुझे नाम नहीं लिखना है, यहाँ पे नंबर लिखना है, तो 6 है, ठीक है। और मोहित के बाद कौन है? तेजस, तो उसका नंबर 4 है, यहाँ पे मैं लिखूंगा तेजस, ओके। प्रीवियस, उसके पहले कौन था? तेजस के पहले मोहिल, उसका नंबर क्या है? मोहिल का नंबर 42। और तेजस के बाद कौन है? हार्दिक, जिसको नहीं समझ में आया, उसका नंबर क्या है? 74। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? हार्दिक, ठीक है। तो हार्दिक से पहले कौन था? कौन था पहले? तेजस, मतलब नंबर 4। और उसके बाद कौन था? सोहिल, मतलब 26। अब समझे तुम लोग? अब तुम्हें क्या करना है? सपोज आई एम आस्किंग, दिस सेशन इज ओवर एंड आई विल आस्क that at least I remember only one person. प्रत्युष ने बोला था कि नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। प्रत्युष, तुम बता सकते हो तुम्हारे बाद किसने बोला था? एटलीस्ट हर स्टूडेंट को उसके बाद का ही याद रखना है और कुछ नहीं, ओके। वी आर नॉट डूइंग दिस, जस्ट मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो दिस 42 इज हुज नंबर? Mohil's number. 6 is Pratyush number. 4 is Tejas number. 42 is Mohil's. And 74 is next, that is Hardik number. ये 4 किसका नंबर है? हार्दिक के पहले कौन था? सॉरी, कोई मिस्टेक नहीं हुई ना मेरी यहाँ पे? जस्ट अ सेकंड। हार्दिक के पहले 04 तेजस, ठीक है। ये 4 आएगा, सॉरी 4 आएगा ना, फिर 74। और तेजस का नंबर कौन सा है? There is some issue, I think. Before Pratyush, no one was there. Next is Mohil, so 42. After Mohil, yeah, Pratyush number is 6. After Mohil, Tejas number is 4. Then Hardik is next, and before Tejas number is 42. ठीक है। हार्दिक के पहले कौन था? तेजस, और उसके बाद 26। ये 26 कौन है? प्रत्युष। तो ये कंटिन्यू होगा। अब समझ में आ गया तुम लोग को? यस और नो? लिंक टू नेक्स्ट एंड लिंक टू प्रीवियस, ये इसलिए करते हैं। यस, ओनली 2 people. यस, व्हाट अबाउट अदर्स? वन मोर, ओनली मयंक। व्हाट अबाउट हार्दिक, सोहेल, स्मित, मोहिल, प्रत्युष? आपको समझ में आया कि नहीं? प्लीज टाइप यस और नो। जस्ट टाइप यस और नो। अगर नो लिख रहे हो तो मैं दूसरा एक और एग्जांपल देता हूँ। सर स्क्रॉल, ये लोग टाइप करे छे। ओके ओके, आई हैव स्क्रॉल्ड इट। अब क्लियर हो गया है ना एवरीवन? ओके ओके, फाइन, ग्रेट। चलो एक और one more real life example I will give about a doubly linked list. Now again, come back to this. What we have learned is there are 3 categories: singly linked list, doubly linked list and circular linked list. Okay, doubly और circular में कोई difference नहीं है. There is no much difference. Only thing is हम क्या करते हैं, अगर ये लास्ट एलिमेंट जो है डबली लिंक लिस्ट का लास्ट एलिमेंट, उसमें हम नेक्स्ट में नल के बदले
क्या लिखेंगे हम? सपोज ये मैंने 1 लिख दिया, ओके, जस्ट वन एग्जांपल, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, तो क्या होगा? आफ्टर 3 इट विल जंप टू अगेन 1, सो आफ्टर 1 अगेन 4, आफ्टर 4 अगेन 2, so this is continuous going on, the whole series loop is going on, right? तो लास्ट में नल के बदले 1 लिख दिया, सिर्फ एक ही चेंज, then it becomes what? It is a circular linked list. Actually वो doubly linked list है, लेकिन you can also say circular doubly linked list. So 3 categories we have learned today, that is 3 type of list. That is, what are the list? Circular, doubly